Students, good afternoon. I hope you will be fine and in the best of your health. Today we are going to start our lesson Faith and Prayers. Now, the first subheading is Faith, Belief in Life After Death. ठीक है अब what is faith? Faith means to believe in something and now यहाँ पर किस बिलीफ की बात हो रही है? बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ. ठीक है, आखरत पर ईमान की. ठीक है, अब ये हमारे अकीदों में से एक अकीदा है. ठीक है, ऑन विच वी हैव टू बिलीव एज अ मुस्लिम. वी हैव टू बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ. हमें एज अ मुस्लिम लाइफ आफ्टर डेथ पर यानी आखरत पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है. ठीक है. Now, one of the basic articles of faith in Islam is the belief in life after death and accountability on the day of judgment. ठीक है ना. Now, यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर ये कहा गया है कि एज अ मुस्लिम वी हैव टू बिलीव इन दिस आर्टिकल. ठीक है ना, हमें इस आर्टिकल पर हर हाल पर बिलीव करना है. वी हैव टू बिलीव इन दैट कि हमने मरना भी है. ठीक है, हमने आखरत को भी देखना है. एंड अकाउंटेबिलिटी मीन्स वी हैव टू गिव आंसर्स ऑफ अवर डीड. ठीक है, हमें अपने अमाल का हिसाब भी देना है ऑन द डे ऑफ जजमेंट. लाइफ ऑन दिस अर्थ इज़ नॉट परमानेंट एंड डेथ इज़ नॉट द एंड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. The time of the day of judgment is known only to Allah. Now, as we know that we all will die. ठीक है ना, we have to die. ठीक है, there will be a time come when we will die. ठीक है ना, no one will live on earth forever. ठीक है ना, कोई भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहेगा. ठीक है, and death is also not the end. ठीक है, अब हमारी मौत भी आखिरी चीज़ नहीं है. After the death we have to see the day of judgment. ठीक है, हमें डे ऑफ जजमेंट आखरत भी देखनी है. ठीक है, एंड ऑन दैट डे वी हैव टू गिव आंसर्स अबाउट द डीड्स दैट वी हैव डन इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, नाउ when will the day of judgment will be upon us? So we don't know the time. ठीक है ना, the exact time is known only by Allah. डे ऑफ जजमेंट का यानी आखिरत का वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ? नाउ व्हाट इज़ आखिरत? ठीक है, व्हाट इज़ आखिरत? लाइफ ऑन अर्थ इज़ टेम्पररी. every living thing must die. Death is certainty. ठीक है, what is certainty? Truth. Death is truth. ठीक है, the whole world will come to an end one day. There will be life after death. We will be born again on the day of judgment and face Allah. This is called Hashr. Now, in these two paras, what is there? That if we are alive, ठीक है, so we are not going to live forever. We will die. ठीक है ना. So death is the truth. ठीक है ना, death is the truth. ठीक है, ये एक सच है कि हम सब ने मरना है. ठीक है ना, और एक ना एक दिन द होल वर्ल्ड विल कम टू एन एंड. ठीक है, तमाम दुनिया ख़त्म हो जाएगी. एवरीथिंग विल फिनिश. ठीक है ना. सो एज अ मुस्लिम वी हैव टू बिलीव दैट आफ्टर डेथ, मरने के बाद वी विल बॉर्न अगेन, हम दोबारा ज़िंदा होंगे. एंड दिस विल नोन एज हशर. ठीक है, वैन ऑन द डे ऑफ जजमेंट वी विल बॉर्न अगेन, जब हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा उसको बोला जाता है हशर. ठीक है, नाउ each of us will be shown the record of our actions in our lives and will be judged by Allah accordingly. We will have to answer for our action and that is known as accountability. Now, why will we born again? We will born again in akhirat or on the day of judgment so that we can answer Allah about the deeds which we have done in this world. ठीक है, हम अल्लाह ताला को अपने उन अमाल का जवाब देंगे जो हमने इस दुनिया में किए. एंड दैट इज़ नोन एज अकाउंटेबिलिटी. नाउ दिस इज़ नोन एज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स टू गिव आंसर्स अबाउट योर डीड्स. ठीक है, दोज whose virtues means good deeds exceed their sins will be pardoned. ठीक है, and sent to paradise, but those whose sins are more will go to hell. Now it is a very simple thing that
the people who will do good, they will go to heaven, and those people who will do bad things or whose sins are more, ठीक है, जिनके गुनाह ज़्यादा होंगे, they will send to hell, ठीक है. These points are explained in many places in Quran about the day of judgment and being brought back to life, ठीक है ना. Now in Quran, ठीक है, in many surahs, ठीक है, this thing is explained. This thing is explained. What is explained? That we will die and we will born again on the day of judgment, and we have to give answers about the deeds we have done, ठीक है ना. Now Allah says, इज़ा शम्सो कुव्विरत वइज़न नुजूमुन कदरत वइज़ल जिबालो सुय्यरत, ठीक है. when the sun with its spacious light, मतलब vast light, ठीक है, फैली हुई रोशनी, जब सन अपनी रोशनी इस folded up ख़त्म हो जाएगी. when the stars fall losing their luster, और सितारे आसमानों से गिर जाएंगे, ठीक है, और उनकी चमक, luster means shine, चमक ख़त्म हो जाएगी. when the mountains vanish, पहाड़ वैनिश हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है. लाइक मिराज. व्हाट इज़ मिराज? मिराज मीन्स आंखों का धोखा होना, मतलब डे ड्रीम होना या इल्यूशन होना, धोखा होना, जो एकदम आपको आंखों के सामने नज़र आए और सडनली वो गायब हो जाए. नाउ व्हाट इज़ दिस सीन अबाउट? नाउ दिस सीन इज़ अबाउट आखिरत, ठीक है ना. ये आखिरत के आने की बात हो रही है कि जब आखिरत आएगी, व्हेन द डे ऑफ जजमेंट विल बी अपॉन अस, व्हाट विल हैपन? सन विल लूज़ इट्स ब्राइटनेस, ठीक है ना. सन की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है. द स्टार्स विल फॉल, ठीक है, वो आसमान से सितारे टूट कर गिरेंगे. दे विल ब्रेक एंड फॉल फ्रॉम द स्काई. व्हेन द माउंटेन्स वैनिश, द माउंटेन्स विल डिसअपियर, ठीक है. सो हेयर दिस होल सीन इज़ अबाउट आखिरत, कि जब आखिरत आएगी तो क्या होगा, ठीक है. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबअसून लियौमिन अज़ीम यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन. Do they not think that they will be called to account, ठीक है. मीन्स के क्या लोग इतने बेखबर हैं, क्या वो नहीं जानते कि उनको दोबारा पैदा किया जाएगा अपने आमाल का हिसाब देने के लिए. ऑन अ माइटी डे ऑफ जजमेंट, a day when all mankind will stand before the Lord of the worlds. Now Allah is asking that do the people not know that they will be born again and they will be standing in front of their God who has created them, and he will answer them about their deeds, accounts, what they have done in this world. Now, in another surah, innahu ala raj'ihi laqadiru yawma tublas sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir. Surely Allah is able to bring him to life the day that all things secrets will be tested. Man will have no power and no helper. Now, here Allah is telling that only Allah is the one who has the ability, who can create a person who is died again, ठीक है ना. मतलब अल्लाह कुछ भी कर सकता है. इवन कि एक मरे हुए बंदे को अल्लाह के लिए ज़िंदा करना बड़ा मामूली काम है, ठीक है. एंड डे ऑफ द जजमेंट विल बी दैट डे, ठीक है ना, जिस दिन हमें अपने अमाल का जवाब देना होगा, ठीक है. उस दिन all the people will be helpless, they will not be having any power like in this world, ठीक है ना. कुछ गरीब हैं, कुछ के पास पावर्स हैं, लेकिन on the day of judgment every person will be helpless and powerless. There will be no power with the people, ठीक है. Now in the next surah, innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim yaslonaha yawmaddin. Now surely the righteous, they will be in bliss. Now riches means good, ठीक है. Now bliss means great
happiness. Now, those people who are doing good, they will get ग्रेट हैप्पीनेस, ठीक है ना. जो अच्छा करेंगे उसको उसका अच्छा रिवार्ड मिलेगा. एंड श्योरली द विकेड, दोज हु वर सिनफुल, ठीक है, जो बुरे होंगे, दे विल बी एन हेल फायर, मीन्स दे विल बी सेंड टू हेल, ठीक है, उनको दोज़ख की आग में गिरा दिया जाएगा. विच दे विल एंटर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ठीक है. एंड व्हेन द डे ऑफ जजमेंट विल बी अपॉन अस, दिस थिंग विल हैपन, ठीक है. From the foregoing verses of the Quran, one can easily understand that Allah, the supreme ruler and judge of all, will be one and only power that day. Now, from all these surah, we can conclude that everything will come to an end. Everything will die. Every living thing will die except Allah. ठीक है. अल्लाह के अलावा हर चीज़, जब आखिरत आएगी तो अल्लाह से वो वाहिद सुप्रीम रूलर है जो मौजूद रहेगी, बाकी हर जिंदा चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है. Obviously, all of us want to know that what will happen to us when we die and where we will go. No one has come back from the dead to tell us anything. However, we have been told about it in the Quran and by our dear Prophet. Everything in this world will come to an end and we will be born again and to be judged for our deeds. Now, no one will know that what will happen after when we will die, ठीक है ना. No one knows about the day of judgment, and even no person has came back to life to tell us that what is going to happen after a person die, ठीक है ना. सिर्फ हमारे सिर्फ ये चीज़ कुरान में मौजूद है. This thing is only available in Quran and this thing is told us by our prophet, ठीक है ना. बस the main thing is that at the end when the day of judgment will arrive, everything will finish. तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और उनको दोबारा से पैदा किया जाएगा ताकि वो अपने अमाल का हिसाब दे सके. The Quran tells us very clearly that the sun will lose its brilliance. Brilliance means brightness, ठीक है. The stars will clash, the mountains will explode into pieces and the whole world will come to an end. Science confirms all this. We also know from science that light and sound waves can be recorded. So it is quite easy to understand that Allah can have the record of all our words and deeds. ठीक है. जब क़यामत आएगी, when the day of judgment will upon us, what will happen? The sun will lose its brightness. सन की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, सितारे टूट जाएंगे, जो पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ कहते हैं, वो एक्सप्लोड हो जाएंगे, पीसेस में टूट फूट जाएंगे, ठीक है. दुनिया ख़त्म हो जाएगी. द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड. और ये चीज़ साइंस ने भी कंफर्म की है. इवन के देखें, अगर आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, यू विल कम टू नो दैट sound waves and light can be recorded. We know that in how many minutes or in how much time the light travels from sun to earth, ठीक है. We know that जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, how we can hear, it is due to sound waves, so we can measure them, ठीक है ना. तो फिर हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि अल्लाह जब इतनी मामूली चीज़ों को भी रिकॉर्ड किया जा सकते हैं, तो अल्लाह तो फिर हमारी हर चीज़ का रिकॉर्ड रख रहा है, ठीक है. अल्लाह के पास तो हमारे कहे गए हर लफ्ज़ का भी रिकॉर्ड है और हमारे हर एक्शन का भी रिकॉर्ड है. So, when we die, our souls will survive until the day of judgment, and then it will be reunited with our body. Allah will judge us on the day of judgment. Why not? Allah has given us the ability to distinguish between good and evil, right and wrong, and with that he has also given us rules to follow in order to live peacefully among his creation. In return, he has promised us a reward. Surely our Lord and Master will treat all his creatures with absolute justice. Every person is responsible for his actions, and those who knowingly go against him will be punished. Life on this earth is a test of his responsibility. Now, what is in this paragraph? In this paragraph, it is clearly mentioned that when we will die, we will born again on the day of judgment, ठीक है. हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा. And what will happen? We have to give answers about the deeds that we have done in this world. और इस दुनिया में हमने जो कुछ भी किया है, हमने उसका हिसाब देना है. क्यों? Because Allah has given us
द एबिलिटी, अल्लाह ताला ने हमें एबिलिटी दी है सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। हम अच्छे और बुरे के बीच में तमीज़ कर सकते हैं। अगर इस तमीज़ के बावजूद भी हम अच्छे और बुरे काम करते हैं देन वी हैव टू आंसर अल्लाह अबाउट आवर डीड्स, ठीक है। इफ़ वी विल डू गुड थिंग्स, ठीक है ना, अल्लाह विल रिवार्ड अस, ठीक है, एंड बट इफ़ वी आर डूइंग बैड थिंग्स सो डेफिनेटली अल्लाह विल पनिश अस, ठीक है। So this life on this earth is, so our life on this earth is our test। ये हमारा एक टेस्ट है कि अल्लाह ताला ने जो हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है, अच्छे और बुरे को सोचने समझने की जो सलाहियत दी है कि क्या गलत है क्या ठीक है, इस चीज़ के बाद अब हमारी लाइफ हमारे लिए टेस्ट है। अल्लाह अब हमें टेस्ट कर रहा है कि आया हम सही को मुंतखब करेंगे या बुरे को मुंतखब करेंगे, ठीक है। So we will be judged according to our deeds, ठीक है। We often see in real life that not everyone is fairly rewarded or punished for his deeds. Some people are very pious and patient and their behavior is exemplary in society, yet they spend their life in misery. On the other hand, those who are wicked seems to be enjoying life. This does not seem fair or right. Reason demands just a solution. There must be another time or day when all will be put right. Allah has promised a fair treatment, but not necessarily here and now. We have to be patient, all the more pure and strong faith to know that all will be put right. If not here, then in the hereafter. This belief clearly assure means convince, yes, satisfy us that there is a life after death in which everyone will be answerable to Allah and will receive due reward or punishment. Now if we look at our life in this world, अगर हम इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को देखें, so what will we see कि यहाँ पे जो सबसे अच्छा होगा, the person who is doing good is not always rewarded, उसको हमेशा उसका अच्छा मतलब फल नहीं मिलता, ठीक है। वो इंसान बग़ैर फल के रह जाते, इस दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे करते हैं लेकिन वो बहुत लाइफ को इंजॉय कर रहे होते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। like if we look at the life of the people in this world, so we simply थिंक दैट इट इज़ इनजस्टिस, ठीक है। ये इनजस्टिस है उन लोगों के साथ जो मतलब गुड डीड्स कर रहे हैं और वो फिर भी मतलब अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे, ठीक है ना। लेकिन जो बुरा काम कर रहे हैं वो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है ना। इस दुनिया में हमें ये चीज़ सही नहीं लगती, लेकिन अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया है, अल्लाह हैज़ प्रॉमिस दैट अ डे विल कम, ठीक है ना। एक ऐसा दिन आएगा व्हेन वी विल बी गिवन रिवार्ड्स अकॉर्डिंग टू आवर डीड्स, जब तमाम चीज़ों को सही रख कर, ठीक है, हमें हमारे एक्शन का एग्जैक्ट रिवॉर्ड मिलेगा। तब जो अच्छे होंगे उनको उनका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और जो बुरे होंगे उनके साथ क्या होगा, उनको ज़ाहिर है दोज़ख में भेज दिया जाएगा या उनको उनको उनके अमल की सज़ा मिलेगी, ठीक है ना। सो डे ऑफ जजमेंट इज़ द डे, ठीक है ना, which satisfies us, which convince us that there will be a day when we will get the exact reward of what we have done, ठीक है। जिस दिन हम लोग एग्जैक्ट अपने अमाल का रिवॉर्ड एज अ पनिशमेंट के तौर पर या इनाम के तौर पे वट एवर, ठीक है, वो हम गेन करेंगे। नाउ here Allah is all powerful and he who has created us in the first place can quite easily bring us back to life. Therefore the fact that he will judge us and reward or punish us according to our deeds seems quite logical means reasonable. So Allah who has created us, ठीक है ना, if he can create us, then after our death, after when we will die, it is very easy for him to bring us back to the life. हमें दोबारा ज़िंदा करना अल्लाह ताला के लिए कोई मामूली काम नहीं है, ठीक है ना। So the belief in the hereafter has a very positive impact. Impact means effect on our life. It is the guiding principles for our actions and motive. If we follow the principle laid down for us by Allah, we will never lose
lose our sense of direction, we will remain focused on our goal, which is approval and pleasure of Allah, and through it realize everlasting happiness of paradise. अब इस आखिरत का हमारी लाइफ पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, ठीक है। इफ़ डू यू थिंक अगर ये आखिरत ना होती तो क्या होता? फिर तो जिसका जो दिल चाहता वो वैसे ही करता। फिर तो किसी को ये डर ही ना होता कि हमें इसकी सज़ा मिलेगी या हमें इसका रिवार्ड मिलेगा। But the day of judgment has a positive impact on our life. It has a positive effect on our life, क्योंकि इससे डर कर जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है कि हमें इसका रिवार्ड मिलेगा, लेकिन जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें ये डर होता है, वी आर अफ्रेड दैट वी विल बी पनिश्ड फॉर व्हाट वी हैव डन रॉन्ग। जो हमने बुरा किया है उसकी हमें सज़ा मिलेगी। सो ड्यू टू द डे ऑफ द जजमेंट we are focused on our goal. And what is our goal? That we have to obey Allah, we have to worship him, and we have to be on the path which he has chosen for us, ठीक है ना। सिर्फ यही वो वाहिद तरीका है जिसकी वजह से हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और गलत काम या किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए डरेंगे, ठीक है। If there was no concept of life after that and accountability, ठीक है, by Allah, the world would be a very chaotic place. Chaotic means disordered or disorganized. As I have told you that if there was no concept of the day of judgment, सारे लोगों का जो दिल करता वो करते, ठीक है ना। यानी कोई किसी के साथ अच्छा भी ना करता और किसी को ये चीज़ महसूस भी ना होती कि अगर मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ तो मुझे इसका कोई बुरा फ्रूट मिलेगा, ठीक है ना। The strong and selfish would mistreat the weak and helpless, and no one would be prepared to take responsibility for it. The hope of a reward of being good and the fear of punishment for doing wrong encourages responsible human behavior and ensure a civilized and orderly society. Civilized means educated. Now it is due to the day of judgment, ठीक है। ये सब आखिरत के खौफ की वजह से कि हम लोग जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें ये खुशी होती है कि हमें इसका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जब हम कोई गलत करते हैं तो हमें ये डर भी रहता है कि हमें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और यही वो चीज़ है जो लोगों को अच्छे तरीके से बिहेव करना सिखाती है, एक एजुकेटेड और ऑर्डरली सोसाइटी बनाती है, ठीक है। अगर ये चीज़ ना होती तो क्या होता? एवरीवन विल मिसट्रीट द वीक एंड हेल्पलेस। हर कोई जो वीक है, जो हेल्पलेस है, उनको मिसट्रीट करता हो और जिसका जो दिल चाहता वो वही करता। सो इन शॉर्ट, वी as a Muslim have to believe on life after death. We have to believe on life after death. We have to believe that when we will die, we will born again. Allah will make us come to life, ठीक है, for what? So that we can answer about the deeds that we have done in this world. So this was all about faith, belief and life after death. I hope that your concepts are clear, but if you have any questions you can ask me, ठीक है। We have read page number 8, 9, 10 and 11. So thank you so much for your time.